और क्या स्लोगन यूज किया गया? साइमन गो बैक। Congressmen waved black flag in a peaceful demonstration at Madras under the leadership of Dr. Ansari. कुछ इस तरीके से जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, ये ब्लैक बैनर यूज किया गया और उस पर लिखा गया साइमन गो बैक, और पीसफुल तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन की गई। The opposition of Simon Commission led to intensification of economic discontent, which resulted in emergence of certain radical parties and growth of terrorist activity. अब साइमन कमीशन के अपोजिशन के कारण बहुत ज्यादा डिसकंटेंट हुआ या बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज ग्रो हुई। जो रेडिकल पार्टीज थी वो क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी, तो ऐसी एक्टिविटीज रेज हुई। A youth wing with socialist leaning arose with the fold of Congress, which was led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. अब उसमें यूथ ने भी पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कांग्रेस के साथ रहकर अपोज किया, जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। Then Nehru report. Lord Birkin had the head of Secretary of State of India challenged the Indian leaders to prepare and produce a constitution acceptable to all political parties in India. The challenge was accepted by the Congress. अब लॉर्ड बिरकिनहेड ने जो इंडिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इंडियन लीडर्स को ये चैलेंज किया कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करो जो सारी पॉलिटिकल पार्टी जिसे एक्सेप्ट कर ले, राइट? तो कांग्रेस ने उस चैलेंज को क्या किया? एक्सेप्ट किया। Preliminary talks were held between the Hindu and Muslim leaders for resolving outstanding differences between two communities regarding the future Indian Constitution. सबसे पहला टास्क क्या था? जितने भी हिंदू और मुस्लिम लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन दो कम्युनिटीज के बीच में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उसे रिजॉल्व की जाए ताकि इंडियन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली बिल्ड हो। और स्मॉल कमिटी consisting of 9 members was formed under the chairmanship of Pandit Motilal Nehru to draft a constitution of India. The committee was ultimately successful in drafting a constitution acceptable to all its members. It was adopted by all party conference held at Lucknow from 28 to 31st August 1928. और फिर ये जो कमिटी थी ये सक्सेसफुल रही, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो सारी पार्टी के मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, और फिर इसे क्या किया गया? अडॉप्ट भी किया गया लखनऊ में 28 से 31 अगस्त के बीच में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। द मेन प्रपोजल ऑफ द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड बाय नेहरू इंक्लूड द पॉइंट इट प्रपोज्ड डोमिनियन status of India. Responsible government were to be introduced both at the center and the provinces. The government at the center was to be federal, one including those of the native states. The residuary power were kept with the center. The parliament at the center would consist of 2 houses, while provincial legislature would have single house. A committee of defense was proposed at the center. Joint electorate were proposed throughout the India. However, reservations of seat on the basis of population was proposed of the lower house at the center in the case of Muslims. In the province, no reservation of seat was kept in Punjab and Bengal. In the northwest frontier province, seats were kept reserved for non-Muslims, while in the rest of the provinces, seats were kept reserved for Muslims on the basis of their population. All these reservations were allowed for a period of 10 years. The fundamental rights were to be incorporated in the constitution. तो ये सब क्या थे? ये जितने भी पॉइंट थे ये मेन प्रपोजल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, राइट, नेहरू रिपोर्ट में, उसकी पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज civil disobedience movement. The Congress held an annual session in December 1929 at Lahore.
with Jawaharlal Nehru as its president. अब एक एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1929 में लाहौर में, और जवाहरलाल नेहरू जी उसके प्रेसिडेंट थे. लाहौर सेशन डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल. अब लाहौर सेशन का सबसे मेन गोल क्या था? पूर्ण स्वराज. इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस. Lahore session decided to celebrate Independence Day all over India on 26 January 1930. On that day, the tricolor flag was hoisted at many places. Congress Working Committee authorized Mahatma Gandhi to launch a program of civil disobedience, including non-payment of taxes, with the ultimate objective of attaining Purna Swaraj. Now, लाहौर सेशन ने डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और पूरी कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पर फ्लैग को होस्ट किया गया. और गांधी जी की जो कमेटी थी, जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, वहां पे गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया. और इसके अंदर क्या था कि हम जितने भी लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे, और उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? पूर्ण स्वराज. महात्मा गांधी announced civil disobedience movement and launched the famous Dandi March or Salt Satyagrah on 12th March 1930. He left Sabarmati Ashram with 79 satyagrahis and reached Dandi on Gujarat coast to break the salt law by picking salt from the coast. अब उन्होंने दांडी मार्च जो थी वो लॉन्च किया, और जिसे सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, राइट. और वो दांडी पहुंचे. दांडी इज अ प्लेस इन गुजरात जहां पे उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. देन गवर्नमेंट रिप्रेशन. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेसिव मेजर्स अगेन. अब गवर्नमेंट ने वापस कुछ रिप्रेसिव मेजर्स लेना स्टार्ट किए, जैसे कि अबाउट 60,000 पीपल वर अरेस्टेड, बट रिप्रेसिव मेजर वर इनइफेक्टिव. अब 60,000 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन ये मेजर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. Hence, British throughout of the conciliatory measure, they called Mahatma Gandhi to suspend the disobedience movement and signed a pact in 1931 known as Gandhi Aryan Pact. और उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी से कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करें, बट ऐसा नहीं हुआ. He suspended civil disobedience movement and attended second round table conference held in London in 1931. अब उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड किया, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वो लंदन गए 1931 में, बट नथिंग मटेरियलाइज्ड. ही केम बैक एंड रिन्यूड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब वहां पे जाने के बाद उन्हें कुछ मटेरियलाइज नहीं मिला, मतलब कुछ सेंसफुल नहीं था, तो उन्होंने वो वहां से वापस आए और उन्होंने वापस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया. ही वाज अरेस्टेड एंड कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. तब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया. Now, communal award. In 1932, government announced the communal award or separate electorate for minorities, including scheduled castes. Mahatma Gandhi opposed this scheme. Later, he signed the Pune Pact with B.R. Ambedkar with regard to the upliftment of scheduled castes. Now, अब scheduled caste के लिए उन्होंने separate electorate बनाया जो गवर्नमेंट थी उन्होंने. तो महात्मा गांधी ने इसका अपोज किया, और फिर बी आर अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने पूना पैक्ट करके साइन किया, और जिसके अंदर उन्होंने शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किया. इन द मीन टाइम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन फ्रॉम 17th November to 24th December in 1932. Congress boycotted it.
In June 1933, Mahatma Gandhi advised the suspension of the mass civil disobedience but suggested continuation of individual satyagrah. अब महात्मा गांधी ने सिविल मास का जो सिविल डिसोबीडियंस था उसे सस्पेंड किया और ये सजेस्ट किया कि एक इंडिविजुअली हम सत्याग्रह करें. It continued for 8 months, but with no result. The government did not enter into a dialogue with Mahatma Gandhi and Congress anymore. Gradually, movement passed into oblivion and was finally suspended by Congress in April 1934. Right. Then, Government of India Act 1935. After the third round table conference, the British government passed the Government of India Act in 1935. The Act ended its system of directorate and provided for a new system of provincial government based on provincial autonomy. Congress contested in election held for provincial legislature in 1937. Congress won and formed ministries in 7 out of 11 provinces. अब कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा और उसमें वो जीते. अब 11 प्रोविंसेस में 7 प्रोविंसेस में कौन आया? कांग्रेस जीत गई. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इनिशियली फॉर्म्ड बाय इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार मोस्टली कैप्चर्ड बाय जापान in her Malaya campaign. Then in Singapore, it drew large number of volunteers from the expatriate Indian population in Malaya and Burma. Captain Mohan Singh was in charge of the INA when it was formed. Then Second World War and Cripps Mission. Second World War broke out in 1939. British government demanded active cooperation of Indians in the war. So the Second World War start हुआ 1939 में और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमांड की कि इंडियंस जो हैं वो एक्टिव कोऑपरेट करें इस वार में. The British government promised for a responsible government for India soon after the war. और ये प्रॉमिस किया कि इंडियंस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी वार के बाद. In March 1942, British government sent a mission headed by cabinet minister named Sir Stafford Cripps to meet the Indian leaders. It suggested dominion status for Indians, but Congress rejected the offer. The negotiation between Cripps and the representative of Congress broke down, and on 11 April 1942, the proposal was suddenly withdrawn. The liberal Hindu MAHAVEER and the Sikhs had rejected the proposal earlier. The Muslim League rejected it because its demands for a separate nation was not clearly accepted. Now, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया, भेजा और ये कहा कि आपके लिए एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा इंडिया को, राइट. बट ये जो प्रपोजल था उसे रिजेक्ट किया गया. डायरेक्टरी मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हो. जैसे उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और सेकेंड अथॉरिटी कांग्रेस, राइट. Now, Quit India movement. अब नया start हुआ, that is Quit India movement. After the failure of Cripps mission, Congress decided to take active steps to compel British to quit India. अब जैसे ही Cripps का जो मिशन था वो फेल हुआ, कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि वो एक एक्टिव स्टेप लेंगे ताकि ब्रिटिश इंडिया को क्विट कर सकें, जाए यहाँ से. On 8 August 1942, All Indian Congress Committee adopted resolution in favor of starting a mass movement on a large scale. Gandhi inspired people and gave slogan. He said, "We shall either free India from the clutch of British or we should die in this attempt." या तो हम इंडिया को फ्री करेंगे ब्रिटिश से या फिर हम
मर जाएंगे, ऐसा उन्होंने स्लोगन दिया लोगों को। दिस स्लोगन बिकेम पॉपुलर इन द फॉर्म ऑफ डू और डाई। डू और डाई के फॉर्म में ये स्लोगन फेमस हुआ। गांधी फर्दर सेड दैट वी शुड नॉट लिव टू सी परपेचुएशंस ऑफ स्लेवरी। अब हमें ये नहीं, गांधी ने ये भी कहा कि अब हम और ज्यादा स्लेवरी के फॉर्म में, गुलामी के फॉर्म में नहीं रहेंगे, राइट। देन कांग्रेस डिमांडेड द इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। कांग्रेस ने डिमांड किया कि इमीडिएटली ब्रिटिश का जो रूल है वो एंड हो। रियॉट्स ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री, हर तरफ झगड़े होने लगे। देन पीपल सेट फायर ऑन पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट केम डाउन विद द आयरन हैंड to suppress the revolt. Mahatma Gandhi was arrested and Congress was declared an illegal organization. Then INA, that is Indian National Army. Subhash Chandra Bose, the founder of Indian National Army, that is Azad Hind Fauj, believed in a revolutionary method to attain freedom. उन्होंने revolutionary method का use किया और वो उसी में बिलीव रखते थे। In March 1941, Bose escaped from Calcutta prison and reached Berlin. He organized a famous Azad Hind Fauj or Indian National Army consisting of Indian soldiers who had been made prisoners of wars in Singapore by Japanese army. और उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को उसका पार्ट बनाया जो प्रिजनर थे सिंगापुर वार में, और उन्हें प्रिजनर जापानीज आर्मी ने बनाया था। During Second World War, when the Japanese army started advancing towards India, Indian National Army soldiers joined Japanese and entered India. He gave slogan "चलो दिल्ली, दिल्ली", और उन्होंने वहां स्लोगन दिया "चलो दिल्ली", that is March to Delhi. But Indian National Army had to surrender to British after the defeat of Japan in the Second World War. जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हारा, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर लिया था। देन पोस्ट 1945 डेवलपमेंट। In 1945, the government changed in England and Labour Party came to power. The Labour Party Prime Minister Clement Attlee was sympathetic towards Indians, और जैसे ही इंग्लैंड में पार्टी बदली, मतलब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, अब उस गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक थे, मतलब and sent cabinet mission in 1946. This mission decided to transfer power and propose an interim government and a constituent assembly to frame constitution of India. और वहां से ये प्रपोज किया गया कि इंडिया के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप किया जाएगा। It also recommended a federal government which would deal with foreign affairs, defense and communication with other powers would be in with the provinces. और ये भी कहा गया है कि एक फॉरेन अफेयर के लिए, डिफेंस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए अलग पावर बनाई जाएगी या प्रोविंसेस बनाई जाएगी। Then Mountbatten Plan. In 1947, Lord Mountbatten presented a plan for a division of India into two independent nations, that is Indian Union and Pakistan, even though the Congress was not ready for this plan. अब माउंटबैटन ने क्या किया, एक प्लान बताया जिसके अंदर इंडिया के दो डिविजन्स किए गए। पहला था एक इंडियन यूनियन और दूसरी थी पाकिस्तान, लेकिन कांग्रेस इस पार्टीशन के लिए, इस डिवीजन के लिए रेडी नहीं थी। The billing consisting of provinces of the Mountbatten on 3rd June 1947 was introduced by British Prime Minister Clinton Attlee in the House of Commons on 14 July 1947. The bill was passed as the Indian Independence Act 1947. The act made India and Pakistan independent dominions, and princely states were left on the assent or to either. The act laid down detailed measures for the partition of India and speedy transfer of political power to the new government of India and Pakistan. फिर
एक्ट पास किया गया जिसके अंडर ये कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स है और उनकी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, उनका पॉलिटिकल जो पावर है वो ट्रांसफर किया जाएगा। देन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। In accordance with the Indian independence, the Act 1947, India was partitioned in 15th August 1947 into India and Pakistan. It also provided for the end of British control over the Indian affairs from 15th August 1947 और 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश का कंट्रोल इंडियन अफेयर्स पर खत्म हो चुका था। ब्लडशेड एंड वायलेंस मार्क्ड द exodus or refugee. Lord Mountbatten was appointed the Governor General of Free India. Muhammad Ali Jinnah, the first Governor General of Pakistan. Liaquat Ali Khan became the first Prime Minister. So इस तरीके से सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म की गई दोनों ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज की। बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन दिसंबर 1946 with the task of framing a constitution of free India, और एक टास्क बनाया गया कि फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of constituent assembly and Dr. B.R. Ambedkar the president of drafting committee. They completed the work of in November 1949. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. This day was chosen in the memory of Declaration of Complete Freedom or Purna Swaraj on 26 January 1930. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने का टास्क था ये नवंबर 1949 में हो गया था और इसे फोर्स में या इन्फोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में इसको इन्फोर्स किया गया और इसे इस डे को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इन द मेमोरी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, राइट। सो दिस इज इट, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। टेक आउट योर बुक एक्टिविटी और बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट इज बी, फर्स्ट इज बी, सेकेंड इज ए, थर्ड इज बी, फोर्थ का एक्चुअली जो ऑप्शन है वो सारे ही ऑप्शन गलत हैं। सो जो सी वाला ऑप्शन है उसको 1928 कर लीजिए आप लोग, 1928 समझ में आया, और 1928 को मार्क कर लीजिए जैसे मैंने कर रखा है 1928, ये जैसे मैंने 1928 को चेंज कर दिया है ना, ऐसे आप भी 1928 कर लीजिए उसे, क्योंकि सारे ही ऑप्शन उसमें गलत दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन ईयर 1931, सी, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज इज 45123, 45123, fill in the blank. Ahmedabad, AHMEDA, AHMEDA, BAD, Ahmedabad, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिगो फार्मर्स, INDIGO, इंडिगो, इंडिगो फार्मर्स। नेक्स्ट, Rowlatt Act came into effect in year 1919, 1919, 1919,
Then Swarajist contested the election of 1923, 1923. Then do or die became slogan for the Quit India movement. QUIT, quit. QUIT, quit India movement. हो गया? Now, true false. First one is false. Rowlatt Act provided for a person to be released without trial. False. Second is also false. And third one is true. Fourth one is true. And fifth one is also true. So book activity हो गई आप लोगों की? अगर कंप्लीट हो गई है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए. मैच द फॉलोइंग की सीरीज है 4 5 1 2 3. 4 5 1 2 3. ठीक है.